नमस्कार बिग स्टोरी को स्वागत करुछि मु तपस्विनी। चंद्र विजय परे आज सूर्य नमस्कार अर्थात सूर्यंक रहस्य बुझिबाकू यात्रा करिबो Aditya-L1 मिशन आदित्य पई आरंभ होई सारिछि काउंटडाउन। जेतेबेले आज दिन 11:50 रे PSLV C-52 रे उत्क्षेपण हेबो भारतर प्रथम सूर्य अभियान Aditya-L1। आज दिन 12:10 रे एथिपाई बहु पूर्वर गतकाली 12:10 रु गणना आरंभ हो सारी बेले इसरोर प्रस्तुति भी चूड़ांत पर्यायर पहुंची सेपटे बड़ मिशन लंचिंग पूर्व इसरो अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक माने तिरुपतिर विभिन्न मंदिर को जाई आशीष भिक्षा करथिले। आ सबुठु एठी गोटे बड़ कथा हेउछि ओडिशार बहुत बड़ अवदान रही मिशन आदित्य रे ओडिशार भी रही बड़ योगदान ओडिशा रे तैयारी होईछि। एथिलागी अनेक यंत्रांश लंचिंग परे 4 मास भितरे पृथ्वीठू 15 लाख किलोमीटर अर्थात चंद्रठू 4 गुण दूर को जीव Aditya-L1 हेले एते दूर को जाई कौन करिवो एही महाकाश यान एवं सूर्यर केउ रहस्य उन्मोचन करिवो सेथि पई समस्तक मनरे गुटे उत्कंठा भरी रही पाखै आसुछि मिशन आदित्यर ए शुभ मुहूर्त लॉन्च पैड रे तैयार इसरोर वर्कहर्स PSLV C-57 एबे केवल अपेक्षा आज दिन 11:50 को ठीक यही समय भूपृष्ठ को छाड़िब Aditya-L1 आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर रे 2 नंबर लॉन्च पैड रु आकाश चिड़िब PSLV XL क्लास रॉकेट उत्क्षेपण प्राय घंटाए परे यह Aditya-L1 को लो अर्थ ऑर्बिट रे अवस्थापित करिब। भूपृष्ठरु अपेक्षाकृत स्वल्प उच्चता विशिष्ट एही कक्षपथरे अवस्थापित हेबा परे पृथ्वी को प्राय 4 थर परिक्रमा करी निजर कक्षपथ को विस्तार करिबा Aditya-L1 एहा परे पृथ्वी ठारू 15 लाख किलोमीटर दूर रे थिबा लाग्रांजियन पॉइंट 1 बा L1 अभिमुखे आगे जीव सेठारे एहा पहुंचीबाकू 125 दिन लागिबो। तेणु 2024 जनवरी प्रथम सप्ताह सूर्यंक उपरे गवेषणा आरंभ करिबो Aditya-L1 सेप्टेम्बर रे Aditya-L1 परे अक्टोबर रे गगनयान टेस्ट व्हीकल लॉन्च हेबो बोली सूचना दैछंती इसरो अध्यक्ष। एबे गोटिए परे गोटिए इतिहास रचिबारे लागिछि भारत। प्रथमे मिशन आदित्य आरंभ करा जाइछि जेतेबेले चंद्रयान 3 सफल हैला तापरे ये मिशन आदित्य आरंभ होईछि। आज जेतेबेले ठीक 11:50 समय हेबो PSLV C-5 रे उत्क्षेपण हेबो भारतर प्रथम सूर्य अभियान Aditya-L1। तेबे एथिपाई गणनामी आरंभ होई जाइछि सेपटे एही बड़ मिशन रो लॉन्चिंग पूर्वरु इसरो अध्यक्ष वैज्ञानिक माने तिरुपतिर विभिन्न मंदिर को जाई पूजा अर्चना करथिले। केवल सेतिके नुहे ओडिशा कथा जदि कहबा ओडिशार अर्क क्षेत्र रे मध्य सूर्य देवता को पूजा अर्चना करा जाइछि। सूर्य और पृथ्वीर निकटतम क्षेत्र पृथ्वी ठारू 13 लाख गुणा मध्य आगो को बढ़िबो। या पृथ्वी ठारू 15 लाख किलोमीटर दूर रे थिबा लाग्रांजियन पॉइंट 1 बा L1 अभिमुखे आगे जीवो। तेबे जानिबा को यह चेष्टा करिवो जे आदित्य फोटोस्फियर तापमात्रा 5500 डिग्री महाकाश विज्ञानी शुभेन्दु पट्टनायक एनी प्रतिक्रिया रखुछंती आसन सुनबा। हमर तथ्य संग्रह करबा होची ए अभियान मुख्य लक्ष्य आ सेही तथ्य को विश्लेषण करी वैज्ञानिक माने बहुत कथा आगुरु प्रकाश करिवे बा कहिबे जेतेबेले कि केतेबेले हमर झड़ आसुची केतेबेले सोलार फ्लेयर होची से सब को पूर्व अनुमान करने यार लक्ष्य रही। तेणु जहाँ आप कहते यहाँ निश्चिंत भाव में सफल हबार आशा रही। आज तो लंचिंग केवल लंचिंग है कि से छोट कक्षपथर घूरी बुल तापर धीरे धीरे प्राय 120 दिन पर से पहुँचला तार परीक्षा निरीक्षा आरंभ कलापर आम कह आम सफलता हासिल कले आटा पुणी 5 वर्ष रही कम कर तो 5 वर्ष धरी कंटिन्यूअसली प्रत्येक मिनिट्रे सी आमको तथ्य पठे चलो। तो निश्चिंत भाव में यहाँ गोटे बड़ उपलब्धि हम आम जी पूरा ये सफल हो पारे।
तेबे आ मात्र किछि समयर अपेक्षा आरंभ हेबो भारतर सूर्य अभियान श्रीहरिकोटारू Aditya-L1 को प्रेरण करिबो इसरो एवं सारा भारतवासी अपेक्षा करिसेंती उत्साहर सहित सारा भारत नुंती विश्वर नजर मध्य आज भारतर ये सूर्य मिशन उपरे रहिछि एवं याकु नै कि अनेक लोकंक मनरे अनेक आशा चंद्रायन 3 रा सफलता परे एबे सूर्यर रहस्य जानिबा पई भारतर नुआ प्रयास आरंभ हेबाकु जाउछि सूर्य अभियान श्रीहरिकोटारू Aditya-L1 को प्रेरण करिबो इसरो चंद्र अभियान रो सफलता परे आज भारत आरंभ करिबो सूर्य अभियान आज दिन ठीक 11:50 रे सतीश धवन स्पेस सेंटर रु Aditya-L1 को प्रेरण करिबो इसरो जेतेबेले घंटा रो कंटा टिक 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 हे आगो को चालुछि सेतेबेले सारा भारतवासींकर जेमती हार्ट बीट मध्ये बढ़ी बढ़ी चलीछि आ अपेक्षा खुशी ये होछि से खुशीर जो गोटे उत्साह किए ताकू प्रार्थना सहकारे सफल पाई कामना करुछि तो आउ कि है विभिन्न मंदिर बानक पूजा अर्चना करी तो आउ कि विभिन्न जगार मिठा बांटी अनेक प्रकार सेलिब्रेशन चली तेज Aditya-L1 महाकाश यान को इसरो पृथ्वी ठारू 1.5 न्यूत किलोमीटर उच्चरे हालो ऑर्बिट रे स्थापन करिबो जहां इसरो पाई एक जटिल कार्य कारण हालो ऑर्बिट रे पृथ्वीर आकर्षण शक्ति शेष हेउछि और सूर्यर आकर्षण शक्ति आरंभ हेउछि एठारे कोनोसी छोट वस्तु को दीर्घ समय रखा जाई परिबो तबे सौरयानर गति को नियंत्रण करा न गले ताहा सीधा सूर्य अभिमुखे चली जिबार आशंका मध्ये रहिछि हालो ऑर्बिट रे सूर्य यान को स्थापन करी भारत सूर्य उपरे अनुध्यान करी तथ्य हासिल करिबो Aditya-L1 रे मोट 7टी पैलेट रहिछि एही सौरयान संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित होइतिबा बेले एहा उपरे सारा विश्वर नजर रहिछि सूर्य मिशन पाई चली पूजा अर्चना सूर्य अभियान रो सफलतार कामना करी वाराणसी स्वतंत्र पूजा अर्चना करा जिबा सहित होमयज्ञ मध्य करा जाइछि ओडिसा रे मध्य अर्क क्षेत्र रे पूजा करा जाइछि सूर्यंक आराधना करा जाइछि तेणु सूर्य अभिमुखे जीवा आदित्य आउ थरे मु कहि रखुछि ठीक दिन 11:50 रे सूर्य को अभिमुखे जीव Aditya-L1 सैटेलाइट श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर रु हेबो उत्क्षेपण Aditya-L1 सैटेलाइट को नहीं जीव PSLV एक्सेल रॉकेट प्रथमे पृथ्वीर कक्षपथरे Aditya-L1 को छाड़िबो PSLV एक्सेल 3 ରୁ 4 थर पृथ्वी को प्रदक्षिण करिबा परे माध्याकर्षण क्षेत्र बाहर को जीव सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस बा SOI बाहर को जीव आदित्य क्रूज फेज रे हालो ऑर्बिट को जीव Aditya-L1 सैटेलाइट अर्थात सूर्य और पृथ्वी मध्य स्थिरीकृत लाग्रेंज पॉइंट 1 को जीव निर्धारित स्थान रे Aditya-L1 को पहुंचीबा पाई लागिबो 15 दिन एठी आपनक मन रे हुए तो प्रश्न आसुथिबो कि लाग्रेंज पॉइंट कौन जेकोसी ग्रहर चारि पाखे 5टी स्थान रही जहाँ माध्याकर्षण शक्ति आउ थे आसतु शुणा वैज्ञानिक शुभेन्दु पट्टनायक कौन कहते तो से L1 पॉइंट आम चयन कले आठू आम जो अध्ययन करवा से दुई प्रकार इन्स्ट्रुमेंट आमर अच्छी गोटे हूँ रिमोट सेंसिंग बा दूर रही से स्टडी कर आ गोटे से स्थानीय 3टी जंत्र रही जोटे से स्थानर रश्मि बा आसुवा कणिका को अध्ययन कर तो दूर रही आम जाचे सूर्य चारिपटे विभिन्न स्तर रही से कोरोना मंडल बा किरीट मंडल विभिन्न प्रकार जो स्तर रही से स्तर अध्ययन करा दूर रही तो सूर्य जेहेतु बहुत समय अति अधिक परिमाण आलोक एवं रश्मि आसी था तेणु जेकोसी स्थान रहीकि आम तार अध्ययन करें ता अर्थ नहीं आम सूर्य निकट को जावा कारण रश्मि को स्टडी करी अध्ययन करी आम बहुत किसी तथ्य जापर आठू बड़ कथा हूँ आमर लक्ष्य है आम गोटे कंटिन्यूअसली 5 वर्ष धरी गोटे डाटा कलेक्शन करवा तथ्य संग्रह करवा एनालिसिस करवा तो जो जंत्रपाति गुड़िक से गुड़िक कंटिन्यूअसली आमको फटोचित्र पठे चलिए तेणु से फटोचित्र गुड़िक आम रखिकी विषय अध्ययन करवा ता छड़ा आमर लक्ष्य है जे आम गोटे देखा जे प्रकृत में आमर जो सूर्य उठुवा झड़ से जो तापमात्रार चलन हो चेंजेस हो विद्युत चुंबकीय तथ्य गुड़िक आसूची
झड़ उठुची सेगुड़िक कहीं होची तार कारण खोजा आम आ तार पूर्व अनुमान करने आम निश्चय चेष्टा करिबा तो सही सब अध्ययन द्वारा आम निश्चिंत भाव में भविष्य में आमको बहुत सहायक हम आ जहाद्वारा कि आम तथ्य जानिले निश्चिंत भाव में आम सावधान हो पार प्रिकॉशंस नहीं पारिबा तेणु सेटा होची हमर मुख्य लक्ष्य रही। आज ये सूर्य अभियान को लेकिन जो अच्छा वैज्ञानिक शुभेन्दु पट्टनायक से निजर मतामत रखुंट तेज लोकंर धारणा थी कि जिते सूर्य एत दूर अच्छा खरा दिन एत उत्तप्त होणु ये सूर्यजान जाई सेठारे कौन कौन केमिति कार्य कर विश्लेषण भाव में बुझाऊँ तेणु पृथ्वी ठारू 3,33,000 गुण ओजन पृथ्वी ठारू 15 कोटी किलोमीटर दूर तेणु आज ये सूर्यर रहस्य भारतर जो नुआ अभियान आरंभ होगा जाऊँगी समग्र देशवासी अपेक्षा रही विश्ववासी नजर रखिंट कहीं पूर्व जो चंद्रयान 3 सफल है भारतर ये सफलता को लेकिन विश्व आश्चर्य था तेज लॉन्च पैड में तैयार रही इसरो वर्क हॉर्स PSLV C57 आउ समय बहुत कम घंटार कंटा जिते टिकटिक आग को बढ़ुची से समय पाखे आसूची से शुभ मुहूर्त आज ठीक 11:50 यही समय भूपृष्ठ को छाड़ Aditya-L1 आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर रे 2 नंबर लॉन्च पैड रु आकाश चिड़ब PSLV एक्सेल क्लास रॉकेट उत्क्षेपण प्राय घंटाए पर Aditya-L1 को लो अर्थ ऑर्बिट रे अवस्थापित करिब भूपृष्ठ रु अपेक्षाकृत स्वल्प उच्चता विशिष्ट एक कक्षपथ रे अवस्थापित हेब। पूर्वतन NIT निर्देशक सुनील षडंगी कौन प्रतिक्रिया रखुछन्ती आसन सुनिबा। माध्यम विभिन्न दूर दूरांत जगह संगे जोगाजोग कर डिस्टर्बान्स आसब एमती वॉइस कम्युनिकेशन रे जो डिस्टर्बान्स हम सेगुड़ाक आम सहीजा किंतु देखंतु धरंतु इलेक्ट्रिक ग्रिड दिंतु आम नेशनल ग्रिड ओडिशा रे पावर प्लांट रु इलेक्ट्रिक बाहर कोटी कंजम्पशन पॉइंट प्रोडक्शन पॉइंट 100टा जनरेटर लगी 100 जन कंज्यूमर अच्छी तांकर जोगाजोग जमती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माध्यम कम्युनिकेशन माध्यम मोबाइल फोन माध्यम चली सेगुड़ाक डिस्टर्ब हो गले ऑटोमेटिक मशीन सब ट्रिप कर जिवार संभावना थाए पूरा ग्रिड फेल्यूर हो होल कंट्री डार्क हो जिवार संभावना थाए यही सब जिनस जदि अर्ली वार्निंग हुए ताहले उपकार हम सेटा गोटे इमीडिएट बेनिफिट हबार अच्छी या छड़ा आउ गोटे जिनस गोटे मिनिट पर मुझे आलोकपात करी टेक्नोलोजी रे भी बहुत प्रकार नुआ टेक्नोलोजी भी प्रयोग होती चंद्रपृष्ठ रे आपणकर मन थी जो विक्रम जान जाकि ठिया हला सेठी किछि समय गोटे मिनिट ठिया हला तापर तल को ओल्हेला सेटा रॉकेट माध्यम रे गोटे उल्टा फोर्स पकई अटका हला एठी L1 पॉइंट रे को अटकेबा पई ये तो काफी स्पीड रे जाउथिबो सूर्य आड़ को से ब्रेक नदेले रहइबो केमते ब्रेक देकरी स्टेबिलाइज करिया पई ता छड़ा भविष्य में ये जो 5 वर्ष रहिबो लेफ्ट राइट कुआडे जिबार संभावना अच्छी ताकू अटकेबा सेथेरे प्राय 16-24-28टा रॉकेट लगी आ गोटे LM बेली प्रेटी पावरफुल रॉकेट लगी प्रथमे ब्रेक लगेबा यही टेक्नोलोजी सब माध्यम रे से L1 गोटे वैक्यूम दिए गोटे जान को 5 वर्ष धरी गोटे जगार स्थिर करी रखिबा छोट कथा नुह से टेक्नोलोजी भी प्रमाणित हो माध्यम तेज आपण मैंने ये सीधा सड़क देखुं सुनील षडंगी पूर्वतन निर्देशक NIT जहाँ रखुंट कि ये सूर्य मिशन कौन लक्ष्य रही केमिति कार्यकारी कर विश्लेषण करुँच संपूर्ण ये सूर्य अभियान उपरे आउ किछि समय अपेक्षा आउ किछि समय पर भारतर ये जो सूर्य मिशन रही ताकू सफल कराइबा पाई पूर्वरु तो सब प्रकार प्रयास रही केवल देशवासी प्रार्थना वैज्ञानिक मानकर ये प्रयास चंद्रयान 3 सफलता परे गोटे बड़ आशा रही सूर्यर रहस्य जानापी तेणु जाना को चेष्टा करिबो ये सूर्यायन जो अभियान जो रही फर्स्पिटियर तापमात्रा 5500 डिग्री सेल्सियस होता बेले सबुठु बाह्यमंडल ये जो कर्नार तापमात्रा प्राय 10 ରୁ 20 लाख डिग्री सेल्सियस कहीं एथिरे लागिथिबा आउ 3टी जंत्र सूर्यरु आसुथिबा सोलार विंड बा सौर पवन और चार्ज कणिका आदि को छुई ता उपरे गवेषणा करिबो विपज्जनक सौर झड़र आकलन और मुकाबला दिगरे यह बड़ खुलासा करिबो बोली मध्य
आशा करा जाउछि। मिशन आदित्य रे ओडिशार भी बड़ योगदान रही। ओडिशा रे तैयारी होईछि एथिलागि अनेक जंत्रांश लॉन्चिंग परे 4 मास भितरे पृथ्वीठू 15 किलोमीटर अर्थात चंद्रर 4 गुण दूर को जीव Aditya-L1 हेले एते दूर को जाई कौन करिबो आदित्य तापरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो। तेबे भारतर प्रथम सूर्य अभियान पई उत्सुक सारा देश सूर्य उपरे गवेषणा पई प्रथम भारतीय स्पेस ऑब्जर्वेटरी पठाउथिबारु इसरो भी उत्साहित अछि। Aditya-L1 रे लागिथिबा 7टी जंत्ररु 4टी जंत्र सीधा सड़क सूर्य आड़ को मुह करी तापरे 3टी स्तर फोटोस्फियर क्रोमोस्फियर और कोरोना संपर्क में तथ्य संग्रह करिबा। जानिबा को चेष्टा करिबो जे फोटोस्फियर रो तापमात्रा 5400 डिग्री सेल्सियस होइतिबा बेले सबठु बाह्य मंडल कोरोना रो तापमात्रा प्राय 10 रु 20 लाख डिग्री सेल्सियस कहीं बोली एथिरे लागिथिबा 3टी जंत्र सूर्यरु आसुथिबा सोलार विंड बा सौर पवन और चार्ज कणिका आदि को छुई ता उपरे गवेषणा करिबो। विपज्जनक सौर झड़र आकलन और मुकाबला दिगरे यह बड़ खुलासा करि परिबो बोली आशा करा जाउछि। जदि अनेपटे देखिबा चंद्रायन भली सूर्यजान भी लगी ओडिशा रे तैयारी होइतिबा जंत्र सेथिपाई तो कहा जाउछि आज ओडिशा पाई भी गोटे बड़ उत्साहर दिन बड़ गर्वर दिन जो मिशन आदित्य रही ओडिशार बड़ योगदान रही। Aditya-L1 एवं PSLV C57 रो अनेक गुड़िए पार्ट्स इसरो को जोगाई देछि भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल ट्रेनिंग सेंटर बा एही 1.5 टन ओजन रो महाकाश यान निकट को जाउथिबा सेथिरे लागिथिबा उपकरण गुडी को हाई हीट रेजिस्टर बा उच्च ताप सहनी शक्ति थिबा काच क्वार्ज एवं इंकोनोल गढ़ा जाइछि। आउ मिशन आदित्य पई खर्च होइछि प्राय 400 कोटी एबे अपेक्षा आउ किछि समय को अर्थात 11:50 रे PSLV रो C57 रे उत्क्षेपण हेबो भारतर प्रथम सूर्य अभियान Aditya-L1। आउ थरे कहि रखुछि जो सूर्य अभिमुखे जीव आदित्य ताको नै कि लोकंक मनरे मध्य अपेक्षा रही। तेबे जेहेतु ओडिशार बड़ योगदान रही अर्धाधिक पार्ट सब सीटीटीसी प्रस्तुत होइछि एनिकी किछि सूचना बा तथ्य संग्रह करथिले हम प्रतिनिधि कपिलेन्द्र प्रधान आसंतु नजर पकाइबा। ये गोटे उत्सव माहौल आम कहीपर कारण सीटीटीसी परिसर में जो भाई भाव में चंद्रायन 3 रे अनेक उपकरण एठू सीटीटीसी रु जाइथिला सीटीटीसी भुवनेश्वर से भली ये Aditya-L1 मिशन पाई मध्य सीटीटीसी रु अनेक उपकरण जाइछि जेतेबेले कोनोसी उपग्रह लॉन्च हुए बा PSLV लॉन्च हुए सेतेबेले PSLV रे लागे सीटीटीसी रो भुवनेश्वर रो उपकरण अनेक उपकरण लागि थाए एवं उपग्रह पाई मध्य लागि थाए ताले कोन कोन सब उपकरण लागि Aditya-L1 पाई ए संपर्क रे हमें जानिबा इसरो रो जे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर अछंती सीटीटीसी रे सुधीर कुमार दलाई तांकोठु हमें ए विषय जानिया सर ओटीवी को स्वागत करूची एवं जानिबा को चाहूची जे कोन कोन उपकरण Aditya-L1 पाई ए सीटीटीसी भुवनेश्वर रु जाइछि। Aditya-L1 हूँ आम गोटे इम्पोर्टाट मिशन जोटा कि आम अराउंड 4 मंथ रे कंप्लीट करूँ आज जदि आम लॉन्चिंग होचे लॉन्चिंग हला पर सक्सेसफुली आम लॉन्चिंग पर आम देखू अराउंड 4 मंथ लगी जाकि ऑर्बिट इंजेक्ट करने बा जो पर्टिकुलर पथ आइडेंटिफाई कराई से इंजेक्ट होगापी तो देखा गले जमी आम अगर सैटेलाइट सब कंपोनेंट या लॉन्च व्हीकल एज यूजुआल आम PSLV या GSLV जो कंपोनेंट लगी था से सब हूँ बर्तमान जमी RGPD रेड जाइरो इलेक्ट्रोनिक्स पैकेजेस प्लस डायनामिकल ट्यून जाइरो बा जाइरोस्कोप कंपोनेंट्स या आमर जो सोलार पैनल जोटा लगी था साड़ा कंपोनेंट्स ये सब गुड़ा कंपोनेंट आम रेगुलारली यूज करता और से सब Aditya-L1 रे यूज होती जोटा कि सीटीटीसी मैन्युफैक्चरिंग है एंड लेटर ऑन आम इसरो को पठेचु एठू सर्टिफाई कला परे मोर तत्वावधान रे तो तापरे Aditya-L1 पई आउ किछि कंपोनेंट मध्ये लागि जेमति कि MSRW किछि कंपोनेंट्स अछि जोटा 4टी कंपोनेंट लागि छि ताते तो आउ किछि जेमति सेंसर्स या हमर रिएक्शंस व्हील्स जोटा कि ओरिएंटेशन पई हेल्प करथाय बा जेतर हमर ऑर्बिट को जाई थाय से समर बहुत इंक्लिनेशन पई से सब यूज हेथाय तो एमति बहुत गुडा क्रिटिकल कंपोनेंट अछि जाके हम यूज करछु। किंतु सर ये सूर्य मिशन जेहेतु सूर्य निकटतर हो ये मिशन काम करिवो तेणु सेठी तापमात्रा अधिक रही पारे तेणु ये पाई ये आपनकर जो उपकरण एठू सीटीटीसी रु जाईची
से केते कहि परिबा उद्दिष्ट हबो ठीक हबो बा से मिशन पई ये गोटे ठीक कंपोनेंट हम तार क्वालिटी कंट्रोल चेक गोटे निश्चित भाव में गोटे बड़ कार्य थी गोटे चैलेंजिंग जॉब थी निहाती भाव में आप जहाँ गेस कर ठीक कथा जो आम साधारण सैटेलाइट को आम इंजेक्ट करता जमी आम कंपोनेंट यूज करता किछिटा हमर मटेरियल चेंज होता है किछिटा कंपोजिशन ऑफ मटेरियल जोटा कि एलॉयस जेकोसी आम जमी रिक्वायरमेंट वाइज आम ये किछिटा चेंजेस करछु मटेरियल या आम तो पूरा सूर्य को पाखु पूरा पहुंच जाऊनु सूर्य ठू बहुत दूर रोचु 15,000 किलोमीटर डिस्टेंस रहिबो अर्थ थ्रू 15 लाख किलोमीटर अर्थ थ्रू डिस्टेंस रहिबो जोटा कि आम 4 मास कंटिन्यू सॉरी 4 मास पर जाके पहुंची पारिबो आ ता भितर जो डिस्टेंस रहइबो से भितर कोनसे हमरो सैटेलाइट रो कोनसे पार्ट्स को क्षति पहुंचीबोनी काना हम एते पाखु भी जाउनु आ ता पय निहाती भाबरे किछ जो स्ट्रांग कंपोजिट्स मटेरियल्स या अन्य कोन जो मटेरियल जोटा कि रेजिस्ट कर पारिबो हीट को से मटेरियल को यूज कर मटेरियल सर यूज करचन जोटा कि हीट रेजिस्टेंस मटेरियल आपन कहउचंती हां जेमति कंपोजिट मटेरियल किछि रहउची ता सहित हम टाइटेनियम मटेरियल रहउची जोटा कि जार मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस रोचे तो आ किछि स्टील्स रोचे एलॉयस रोचे सब मटेरियल को हम यूज करथाउ मिशन नहीं केते उत्साह अछि बा केते आपनकर अपेक्षा रहिछि जे आमे प्रथम थर पई भारत गोटे सूर्य मिशन रे जाउची Aditya-L1 को आमे लॉन्च करिया को जाउचा मात्र कई मिनिट रो बदे अपेक्षा ता पर याकु नहीं केते आपन उत्साहित अछंती केते आशावादी अछंती सूर्य को L1 जो Aditya-L1 मिशन सूर्य को पई आमे जाउछ माने गोटे निहाती लोक मन भीतर भाबुछ आमे सूर्य विषय गवेषणा कोन करबा सूर्य आपण जानिछन सकाळ उठले सूर्य हम जानिछन सूर्य होसन सकाळ सत्य आदरा लोक आसले सकाळ उठिले सूर्य को प्रथम नमस्कार करथांती तो आमे ता विषय कोन गवेषणा करबा किंतु दरकार पड़छि निहाती काइना वर्तमान आमे सौर जो हम कोन कोन सोलार एनवायरनमेंट जोटा जोटा अछि जे हमर अर्थ अछि अन्य प्लैनेट्स अछि हमर अन्य सैटेलाइट्स अछि आपण जानथिबे जेतले सोलार सौर झड़ होइथाय सौर झड़ समय रे जो वर्तमान देखुछु Aditya-L1 पई सिधासळख ये दृश्य इसरो परिसर solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं ALS जारी है सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश इनका रोमांच देखते ही बनता है इतनी मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya-L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. समस्ते सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल अपेक्षा करिसंती आ मात्र किछि समय रे अपेक्षा आज पाग भी बोध हुए साथ दउछि हां टिके टेम्परेचर अधिक अछि तथापि लोके उपस्थित अछंती देखिबा पई कि केमिति ये शुभ मुहूर्त भारत आ एको पाद आगेबा को जाउछि एको माइल खुंट रचिबा को जाउछि कुछ अलग है
चंद्रमा अनुध्यान पर एवं सूर्यर रहस्य जानिबा पई भारतर जो इच्छा रही समस्त आज अपेक्षा करिसंती एवं बोध हुए निज निज काम छाड़ी लोके के टीवी पाखरे बसिथिबो तो के निज हाथ में मोबाइल धरी प्रत्येकटी तथ्य ऊपर नजर पकाउथिबो आ मोबाइल ऊपर टीवी ऊपर 1600 सेकंड की कोस्टिंग फेज नजर हट नथिबो ये आपण देखुचंती आंध्र स्थित श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर सीधा सड़क दृश्य आपण माने देखुचंती वैज्ञानिक माने मध्य अपेक्षा करिसंती से माने जो परिश्रम करिसंती तांको परिश्रम को सफल रूप देबा को जाउछंती आ सारा भारतवासी मध्य हम वैज्ञानिककर मनोबल बढ़ाइबा पई केउथि पूजार्चना चलीछि तो केउथि प्रार्थना चलीछि नियारा ढंगरे समानंकु उत्साहित करबा पई सेलिब्रेशन चलीछि एवं जो परिश्रम करि सारिछंती सूर्यर रहस्य जानिबा पई इसरोर वैज्ञानिक माने वर्तमान से परिश्रम को केवल सफल रूप दिया जिवो सेथि पई समस्ते नीरव अच्छी एवं अपेक्षा करछंती शुभ मुहूर्त को एवं किछि किलोमीटर दूर रे जो स्थानीय लोक उपस्थित अछंती सेमाने मध्य देखिबा को ये टाण खरा रे उपस्थित अछंती केमिति आदित्य जीव सूर्यंक आडको अर्थात भारतर एबे नुवा अभियान सूर्यर रहस्य जानिबा पई आउ मात्र टर्मिनल समय अपेक्षा समय भी कह जाई परिबनी किछि सेकंड रो अपेक्षा टिक 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 होई जतबेले घंटार कंटा बुलुछि लोकंकर ये हृदय स्पंदन मध्य से Aditya-L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। आज आउ एक सफलता दिगरे पाद बढ़ाउछि इसरो चंद्रमा उपरे अनुध्यान पर प्रथम करी सूर्यंक रहस्य भेदिबो ए दिगरे आजि भूमि पूजन हो सारी अर्थात महाकाश को जीव Aditya-L1 आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन लॉन्च पैड रु आपण माने सीधा सड़क ये दृश्य देखुछंती आ 1 मिनिट 48 सेकंड बाकी है। PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the timer. T-1 minute and counting. -55 seconds. All stops are armed. -50 seconds. All seconds are armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS on. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya-L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the
first stage S139. Ground lead strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lead and air lead strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya-L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं, PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का। वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow
in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा. Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the PS4 will start twice at predesignated times and duration. Minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं. वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है. यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है. Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya-L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravati Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Charhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of PSLV. Hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है. इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है. यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है. We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा. इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं.
लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near Earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya-L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya-L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya-L1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य-L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य-L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यह ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है
कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya-L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope Suite, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयंस
प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य-L1 के नेतभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya-L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome. After India has made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hats. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya-L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya-L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SUIT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya-L1 launch. To start with the principal scientist and PI of SOLEX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya-L1 mission so important and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. First of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And sun is our own star, our dearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially,
with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan. We made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wave bands which are very important for the Earth ionospheric connections like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission, which will allow us to understand the sun, its dynamics, as well as the inner heliosphere, which is an important element for the current day technology, as well as the space weather aspects of it. Thank you so much for your remarks, sir. So now we'll move on to Dr. Anil Bharadwaj. So the sun is a very important energy source of life. Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya-L1 helps us through the mission? Thank you and good morning, viewers. First of all, let me tell you that Aditya-L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the Aditya-L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they come to the earth. We have instruments which look at not only in the sun direction, but also in other directions, for example, perpendicular to ecliptic or in the earth directions. The impact is that we need to see when the sun becomes quite angry, what are the ways in which it is affecting the planet Earth, and L1 point being at point L1, which is just 1% away from the Earth, it is able to provide us a lot of new informations of the plasma and the electromagnetic radiations which is reaching the planet Earth. Thank you so much, sir. So now we'll move on to Dr. Annapurni Subramaniam. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth and also on the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I'm the director of Indian Institute of Astrophysics, and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun in the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of, it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what is a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7 through using this mission. And this instrument looks at the sun as though it is always in total solar eclipse. Now, why you want to have the eclipse all the time? Because you want to see the corona. Why corona? Because when sun burps, when sun is angry, the corona is what it takes the matter away. Now, what is unique about this instrument? This is going to see the corona as close as possible from the disk of the sun. Now, what is so challenging about it? It is because the sun's corona is 1,000,000 times fainter than the disk of the sun. So you have to not see the disk of the sun, but see only the corona. So this instrument is very difficult to make, challenging, but it is made. Now it's going to the orbit. Now what we are planning to study using this instrument is the corona, its dynamics,
Through this emission line, you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. So it's overall this instrument, along with the others, of course, the other PI will also be explaining about it. So these holistically will give you a lot of information regarding not only the sun, but also the heliosphere. Thank you. That was very interesting, Doctor. Thank you very much. And now we'll move on to Durgesh Tripathi, Dr. Durgesh Tripathi. You are the PI of the for the payload suit. How is that different from other telescopes like Hubble or James Webb? And what are you going to investigate using this? Yeah, so good afternoon. My voice is going to mumble because I'm still in the awe of the launch and one of the payload is gone there. So essentially, JWST, which is James Webb Telescope, and the Hubble Telescope, they are going to look at the universe, different objects, galaxies, star formation, and other objects you see in the universe. Whereas when we talk about Aditya-L1, it is going to look at one particular object, which is our sun. And it's also kept on the other side of the Sun-Earth line at the L1 point, whereas the James Webb Telescope went on the other side of the Earth, which is at the L2 point. Now, the scientific difference, of course, they also observe in ultraviolet, but Aditya, as Professor Anil Bharadwaj and also Professor Anna Purnisubramanian alluded to, these are multi-wavelength satellite, and they will be observing all across the electromagnetic spectrum. In particular, suit is going to be looking at the ultraviolet radiation in 2000 to 4000 angstrom, if that matters to you, emits from the lower and the middle atmosphere of the sun. And what we want to look at that how in general the sun's atmosphere is coupled by looking at the observations at various height, and how actually this radiation is coming and getting absorbed in the Earth's atmosphere, and what kind of effect it can have in the chemistry of ozone and oxygen, for example, and also these explosions which are happening, how much radiation they are creating, and how much effect it might have. Thank you. Thank you very much, sir. And now we move on to Dr. Satish Thampi. You are connected with the payload PAPA. Already the plasma particles on the moon are analyzed. How do you analyze plasma particles in the sun? And what is the importance of solar winds, and how does it impact? Thank you. Thank you for giving opportunity to come into this show. As my colleagues, they mentioned actually about the sun. Today we have the auspicious day where actually we are going to our own star, that is the sun. Just I want to tell to the viewers that actually the sun, which is our hero, basically in the solar system. If you look into the mass of the solar system, 99% of the mass of the solar system is occupied by sun. And also, this sun is plasma. Now, when we are talking about the heliosphere, actually, with this, all our planets are engulfed in that thing. You know, we have been studying in decades, maybe in centuries, we have been studying about the sun. But what we were lacking actually a comprehensive approach, because sun is giving its energy mainly in three forms. The first one is the radiation, actually my colleagues already talked about, which we can do remotely from our ground. But the plasma, basically we are talking about the solar wind, what we call the space plasma, as well as the magnetic field. This can be only studied by in situ. If we study all these radiation, particles and field, then only we will get a full comprehensive understanding of the sun. Now, we are getting the first space-based observatory from the Indian soil, and we are making this opportunity. And of course, I am thankful to ISRO and all my colleagues and my teammates from VSSC and all my scientific colleagues here. This is the opportunity we got actually. We are trying to understand actually all the three things: radiation, particles, and field. Already they mentioned about the radiation. Now, Dr. Bibin will be talking about field. Just I want to emphasize on the particles. That's why we named it as PAPA. PAPA means Plasma Analyzer Package for Aditya. This is developed by Space Physics Laboratory in support of Vikram Sarabhai Space Center. And now this instrument has two components. If you look at the solar wind, basically it comprises of 95% protons, then alpha particles roughly around 4 to 5%, then equal number of electrons also. So our PAPA is a comprehensive package measuring both ions and the electrons. Now these electrons, like already our colleagues, they mentioned actually the major transition events like coronal mass ejection. That's a huge mass which is coming out of sun. Basically it's a plasma. Basically when we are talking about solar wind, basically nothing but it's the extension of the corona only. That's atmosphere. Now these particles actually, they only actually modulate the energy and momentum of the planetary atmospheres. See, when then sun is quiet, like he is not aggressive, suddenly what we are getting the ambient solar wind. So if you look into that thing actually, that one actually gives
what we call about the interactions, what we call the normal routine phenomenon which is happening on there. But when there is sun is angry, it gives like CME, CAR, or these sort of events are happening. That is really going to affect our planets. That's what we call the space weather. Now, our intention is to understand, first of all, actually what these effects, basically the solar wind, in the ambient condition as well as during this transition universe, how this solar wind behaves, and also how this coronal mass ejections which is passing through different planets, how actually, what are the different things, like what we call about the microphysics, macrophysics, and the mesophysics of that things, that we want to understand. So one thing is actually it's a physics subjective to understand, because we are getting an ideal point, Lagrangian point, which is in the sun-earth plane, and we will be seeing the events exactly there. Second thing is actually, we can definitely monitor the parameters. Like what actually Papa will measure the electrons and ions, we will be getting energy, direction, and angular information, mass information. So if we know these things related to electrons we don't want the mass, but for the ions we are getting the mass information. Coupling all this information, actually what we can do is we can derive the plasma moments. That will be definitely going to the modeling part, actually dynamics part, and that will definitely going to tell about the effect of the space weather effects. Yes. So in due course, actually, with the L1, in addition to other L5 missions, we will be able to tell. This is the importance of the plasma missions. Yes. That actually, as you mentioned, actually earlier with the lunar mission we achieved, we tried to understand that thing. Really, it changed, this plasma studies changed the perspective of the moon. Now, Aditya will give more detail about it. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for that, sir. And now we move on to Dr. Dipankar Banerjee. So, you manage the beautiful solar observatory at Nainital. How do you think the studies of heliophysics will supplement Aditya-L1? Can you tell us something about the history of solar observatories in India? That's right. India has a long tradition of looking at the sun from the ground. In fact, from Kodaikanal Observatory, we have been observing the sun for more than 100 years. And also we have beautiful, solar observatory at Udaipur, in the lakeside, and at Nainital. We are looking at the sun. But there are limitations of looking at the sun from the ground because you can only see the lower atmosphere of the sun. So this was very, very important that we could go to the space. And this is a fantastic opportunity. Originally, more than 10 years back, we were only looking at a small satellite program. And then Professor U.R. Rao suddenly came up with this idea, why are we taking baby steps? We should think big. We should go to much longer distance. And then this opportunity came in, the Lagrangian mission. The entire country, all the scientific institutions got very much highly motivated. There are multiple payloads were then proposed. So eventually now we have a Lagrangian observatory class mission. And as you heard from my colleagues, that it is a multi-wavelength observatory. So that's very important to have the shorter wavelength coverage from the space. And in addition, the ground-based observations are also important. So a combination of the ground-based telescope and the space-based platform is very, very important. And since you asked about the question about the, how Aditya in the overall heliophysics research within the international scenario, we only have 3 spacecraft around Lagrangian 1 point, primarily from NASA and ESA. So I think, again, this is a fantastic achievement from India. If you could reach L1 with the full observatory class mission, it will really open a new window altogether. So I think this is a great opportunity, and we are all looking forward. And as I mentioned, probably we'll request that, a better ground-based facility. We have already projected a National Large Solar Telescope project from the ground. I think this is now high time we have a very nice ground-based telescope also to complement the capabilities of Aditya-L1. Thank you very much, sir. Indeed, it's a very great opportunity. And now we move on to Dr. Vipin K. Yadav. So you're in charge of the magnetometer. What is the contribution of magnetometer to Aditya program? You see, the magnetic field measurements are very crucial in space, and especially at L1 point. What we are going to measure with magnetometer is the interplanetary magnetic field that is coming all the way from Sun and towards the Earth. So typically these values at L1 point are around 5 to 10 nanotesla. But these values increases whenever there is an extreme solar event, such as the coronal mass ejection or say a solar magnetic storms. Now these events are crucial to monitor the near Earth space weather, because these can have an effect on the
life on Earth. If you remember Quebec, there was an event when the power lines were snapped a few years ago. That was because of an extreme solar event. So to keep an eye on the surroundings of Earth, we need these measurements. And apart from that, for solar wind observations also, these measurements will be crucial. Thank you. Thank you very much, sir. So now we move on to Dr. Anuj Nandi. So what is the importance of solar flares and the impact in heliospheres? And how does Aditya-L1 contribute to all of this? Good afternoon, viewers. As my colleagues already pointed out the importance of this mission and the instruments about. So the thing is, as you know, that solar flares are the energetic and explosive energy release in few seconds to minutes time scale, and it is order of 10 to 27 arcs to 10 to 32 arcs. Now the thing is, these solar flares, why it is important, as because the solar flares actually tells the dynamics and activity in the sun. So the thing is, there are two unique instruments built by URAO Satellite Center that is going to cover the solar flares from 1 kV to extremely high energy, around 200 kV. And we know that visible sun is only 6000 degree Kelvin temperature, whereas the outer surface of the sun is million degree Kelvin. So the thing is, why there is disparity? So I think these two instruments, along with the other two instruments, VLC and SUIT, we are going to address this $1 million questions as well as why there is difference. Thank you. Thank you very much, sir. And now I'd like to go back to Dr. Anil Bharadwaj. So there are many satellites that are sent to the space by other nations. So what makes Aditya-L1 different from these satellites? Well, that's a very good question because, first of all, let me again tell you that India will be the third, or ISRO will be the third space agency to have a mission at L1 point. And I just mentioned that it is multi-wavelength, multi-instrument, and multi-direction, and it measures particle, field, and radiations. So you don't have such kind of satellites existing at L1 point so far and currently. That makes Aditya-L1 absolutely unique because we are going to measure remotely, in situ, and particles and fields. I was also mentioning about multi-direction, and that is coming from the ASPECTS payload, which stands for Aditya Solar Wind Particle Experiments. And this is going to measure particles ranging from 100 EVs going to several MeVs, which is essential for us to know because when the CMEs are happening or the sun is quite angry, the plasma which is coming out from the sun ranges from several EVs to several MeVs. And therefore, we should know in what direction the plasma is coming and whether the plasma is getting accelerated in between when it comes from sun towards earth. And therefore, there is a multi-directional information which is available from the ASPECTS payload because it consists of two sensors, SWIS and STEP, essentially giving you in two different energy bands. And therefore, we'll be able to quantify the CME, CIRs, and all the processes which is happening on the sun, which gives out coronal mass ejections. Thank you. Thank you very much, sir, for your remarks. And now finally, we move on to the principal scientist, Dr. Sankar Subramaniam. So how does the Indian science community seek to capitalize on ISRO's space capabilities, especially these observatory missions like Astrostat and Aditya-L1? Yeah, so now ISRO has established that it has a capability to send observatory class missions anywhere in the interplanetary medium. ISRO also is developing capability for small satellite missions like a nanosat, CubeSat, as well as the small satellite capability. And that is something which especially a heliophysics community could utilize it because we can, at a low cost, we can launch many more such instruments which are essential for heliophysics community here in India. So, and also the bigger mission takes its own life cycle because it requires technologies to be developed for a bigger missions. So in between these big missions, if we capitalize on these small satellite missions, and that will enhances the science capability of our country to the next level. And as you know, the science and technologies are always synergized. As the technology improves, your science improves. When I started my career in solar physics, I started with a photospheric magnetic field.
Now we are in a position where we can do coronal magnetic field with Aditya-L1, which was not feasible when I was doing my PhD. So similarly, as we move on and as the technology starts to improve, we would be able to generate much more capable instruments, much more compact instruments, which will enable us to do much more science than what we can currently do. So we look forward to capitalize on ISRO's capabilities, both at the large scale as well as at the small scale instruments, and also its capability for developing new technologies in the near future. Thank you very much, sir. That was very interesting. And to end this, I have a last question to Dr. Dipankar Banerjee. And it's about what kinds of outreach is possible through this launch to energize the scientific community? This is a very, very important question, and we are proud to be Indian now after the Chandrayaan success. I think it's just not the students, it's the entire country is excited. And we got this opportunity to now travel towards Sun. So it is very important that the younger generation, comes into the research and also utilizes the data. These scientific missions are for the community, and it has to be the community driven. So some of our scientists, who have been engaged with this mission for decades, we understand what is expected to be, this data. But the younger generation, they need to be trained. And so for that reason, we also have a Aditya support cell at Nainital, and we are going around in the country. We are regularly conducting workshops. So through these workshops and training program, we really want to reach out to other, people who are particularly in the universities or IITs, because they have so far not been directly involved with the Aditya mission. So I think we are really, really going out, and we expect that the youngsters, the next generation will come and utilize this data, because the data is for the community. So unless, we have more users, we will not be able to effectively utilize the data, scientific data which is coming, and the way we can help the community at large. Thank you. Thank you very much, sir. I think it is very important for us also to reach out to schools and colleges, because the younger generation should be told about this kind of activities which is happening in the country. Chandrayaan 3 launch has galvanized the whole nation, and everybody is interested to know what all is happening in the science and technology within the country. And therefore, this mission, along with the Chandrayaan 3 mission, that is the Aditya-L1 mission and Chandrayaan 3 mission, is going to give us a lot of new information which is going to be very beneficial for the country. Thank you. Thank you very much. Thank you everybody for participating in this discussion. And now we move on to the control room. Thank you, Srinidhi. And I thank all the panelists for enlightening us about the high-tech science that Aditya-L1 is about to do. जी हाँ, अभी आपने सुना इसरो के तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। इस दौरान चतुर्थ चरण के बर्न 1 को कंफर्म किया गया है फिजी टेलीमेट्री स्थित स्टेशन से। इसमें यान में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं, और इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है। और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है। यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV C57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था। और फिर टर्मिनल acquires telemetry signal. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिप बॉर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data.
अब हमारे ग्राफ को वास्तविक समय से दिखाया जा रहा है। यह वास्तविक डेटा है जो अब हम देख पा रहे हैं। Welcome back to the live coverage of PSLV C-57 Aditya-L1 mission. The launch took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The first, second and third stage of the launch vehicle have performed normally, and the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations. Shipborne terminal in Pacific Ocean has started to acquire signal 51 minutes into the flight. अब कुछ ही क्षणों में हम चतुर्थ चरण के पुनः प्रज्वलन को देखेंगे। In the past 26 minutes or so, the ground trace for the flight was being updated by extrapolation. Fourth stage engine started for band 2. यहाँ अभी अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की, चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से। Very happy piece of news here. Normal. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Around 14 more minutes to go for the spacecraft injection. जी हाँ, अभी भी लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य-L1 को अंतक्षेपण के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं। जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा। Fourth stage performance normal. The fourth stage performing normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. यह चतुर्थ चरण है PSLV XL रॉकेट का। इसमें 2.5 टन के नोदक का इस्तेमाल हो रहा है। यह तरल नोदक हैं। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, हर एक 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह कुल प्रणोद 14.6 किलो न्यूटन का होता है। Plus 55 minutes. इस प्रज्वलन काल में इसे 472 सेकंड तक प्रज्वलित रखा जाएगा। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। We are close to 55 minutes 30 seconds past the launch. PS4 stage currently burning for the second time. Stage performance normal.
intended trajectory, closely matching the prediction. Presently, the shipborne terminal is acquiring the signal. Few seconds later, there will be another no visibility phase before Koru starts to acquire signal. जी अभी द्वितीय बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकेंड जलकर यह शांत हो जाएगा। सूर्य एक बड़ा और हमेशा से एक समीप का सितारा रहा है हमारे लिए। असल में यह गर्म आग का गोला है जो अनगिनत हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा प्राप्त करता है और इस ऊर्जा से इस सौर मंडल को एक परिवार के भांति समेटे हुए है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ही हमारी ऊर्जा स्रोत है और इस जीवन जो हम जानते हैं उसका भी स्रोत है। Loss of signal for shipborne terminal. The next telemetry station is Kuru. The telemetry signal break will be approximately 205 seconds. During this non-visibility period, ground trace and flight parameters will not be updated. यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। अगला ट्रैकिंग स्टेशन कुरु स्थित फ्रेंच गयाना स्थित कुरु स्टेशन से हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे कुछ ही समय में। After being injected into the space, the Aditya-L1 will not travel directly to the L1 point. Transfer maneuvers will be performed to position the spacecraft in a halo orbit. Aditya-L1 will first be made to perform maneuvers in Earth orbit. Adjustments will be made in its orbital parameters. After ascertaining the normalcy of the craft, its systems, payloads, and the orbital parameters, burn to exit Earth's sphere of influence will be initiated. After exit from SOI, the cruise phase will start and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit along L1. The total travel time from launch to L1 will take about 4 months for Aditya-L1. इस दौरान आइए आपको अवगत करा दें आदित्य-L1 के मुख्य उद्देश्य से। आदित्य-L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 निर्धार लगे हुए हैं जिनकी मदद से आदित्य-L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं इसके गतिकी का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य के कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति कण और प्लाज्मा वातावरण के प्रेक्षण करना। +1 hour. वर्तमान में आरओडी ने घोषणा की चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वह बंद हो चुका है और इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य-L1 के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। We are now eagerly awaiting the injection of the satellite
As we have the confirmation from the Range Operations Director that the thrust cutoff for 4th stage of PSLV has been achieved. We are 1 hour into the flight. कुछ ही क्षणों में कुरु स्थित ग्राउंड स्टेशन से इसकी पुष्टि की जाएगी। Highly anticipated event next is the separation event of Aditya-L1 spacecraft. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर कुछ ही क्षणों में इसकी पुष्टि होनी बाकी है। यान से अंतरिक्ष यान आदित्य-L1 का सफलतापूर्ण अंतक्षेपण अभी बाकी है। For Aditya-L1, ISRO has developed advanced flight dynamic software to obtain past trajectory data from tracking, apply mathematical computation to calculate present and future location of the spacecraft in a process known as orbit determination. But the correct orbital parameters at the time of injection are of prime importance. अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, जर्मन Aditya-L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। इसकी पुष्टि कर दी गई है। Aditya-L1 mission accomplished, handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya-L1 separation. The mission has been accomplished. PSLV C57 has injected Aditya-L1 satellite into the desired intermediate orbit. PSLV C57 Aditya-L1 mission is accomplished. Aditya-L1 को पूर्ण परिशुद्धता से इसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद वह अपने आगे की सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। Do join us for the address by Chairman ISRO Secretary Department of Space Shri S. Somnath. सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए। अब हम आपको लिए चलते हैं अध्यक्ष महोदय के एड्रेसिंग के लिए। Congratulations. The Aditya-L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya-L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya-L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point. Very
long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft for its long journey and being put around the halo orbit of L1. So with me, the mission executives are there. Mr. Biju, the mission director, and Nigar Shaji, the director of the satellite project. So let them join me. Our Honorable Minister of State for Science, Technology and Space is here, Dr. Jitendra Singh, so I request him to speak a few words. Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. And thanks also for making us realize the enormous potential of our space fraternity. Ladies and gentlemen, Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya-L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. To name a few, the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, the National Aerospace Laboratories, the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, the Nijri NGRI, Nagpur, the IIT Kharagpur, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Mumbai, and the list is too long. But that, having said that, gives me the confidence to say that this day, the 2nd of September 2023, is a day of reckoning when we move on into the next 25 years of Amrit Kal, and Mother India pledges with the collective will and collective effort of our 140 crore children to reach and occupy the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, the entire ISRO team, and the entire countrymen. May I request the project director of Aditya-L1, Nigar Shaji, to say a few words. Good afternoon. It's a dream come true for Team Aditya-L1, and I'm extremely happy that Aditya-L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya-L1 solar panels are deployed, and the spacecraft will be normal. And Aditya-L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit, and followed by the trans-L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun-Earth Lagrange point L1. Once the Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the center directors
for their support and guidance for making this mission possible. And my thanks are due to my project team and all the project executives across the center, payload teams, especially the teams from the IAA and IUCA, for the relentless effort in building the payload as well as the spacecraft. And my special thanks to the expert committee who have been guiding all through the entire project life cycle. And I thank all the industrial partners and the entire URSC team for their invaluable contribution. And I feel really honored and privileged to be part of this mission. And at this juncture, I would like to remember Professor U.R. Rao, who sowed the seed for this mission, and looking forward for a successful halo orbiting session and further great science output from the Aditya-L1 mission. Thank you all. Sri Biju, the mission director and the project director of PSLV. Good afternoon to all. My big salute to all of you for achieving this wonderful mission of Aditya. We have injected Aditya in its intermediate orbit. PSLV in its 59th mission has successfully accomplished injecting Aditya-L1 in its intermediate orbit. It's all because of the dedicated effort of all of you. The challenging requirements given by satellite team was indeed it was very challenging to meet the orbital requirements. We have gone for a new mission design strategy. We have gone through numerous simulations to validate this, and that is the proof that you are having now. I take this opportunity to thank each and every one of you for achieving this wonderful mission. I take this opportunity to thank all my review forums, chairman and members of all review forums, and our industry partners for giving high reliable systems for PSLV, and all our family members. With this, our capability of PSLV has increased manifold to venture into new missions, to new and challenging missions. I take this opportunity to thank my project team led by our Sri M.J. Lal as well as Damodaran, Vehicle Director and Associate Vehicle Director, in leading the entire campaign. I wish our satellite team an excellent time ahead for completing all the operations and completing all scientific objectives they have envisaged. Thank you all. Thank you very much. Thank you everybody for spending your time watching this mission and also supporting us and congratulating us, and we joined the entire country. We are very proud of the fact that we could do this mission, Aditya-L1 mission, just following the Chandrayaan-3 activities, and all of you are aware that the lander and the rover are still functioning, and our team is with the scientific instruments doing a lot of work now. And the good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander, and we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days, because it has to withstand the night. So until we hear about them later, so I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work of building the very strong space infrastructure and capability for India, and which will be becoming one of the strong pillars of science and technology for this nation. And thank you so much for the contributions once again, and wish you all the best for meeting you for next mission from Satish Dhawan Space Center. Thank you. आपण मैंने इसरो स्पेस सेंटर सीधासख भाव में दृश्य देखुले जी अच्छा इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथन निजर प्रतिक्रिया रखुले। आज ये जो आदित्य-L1 अच्छी उत्क्षेपण सफल होइछि, किंतु ए मिशन सफल होगापाई आहरी 4 मास बाकी अच्छी। 4 मास परे जदि मिशन सफल हुए ताहले सूर्यर रहस्य खोजिब आदित्य-L1। चंद्र अभियान सफलता परे आज भारत आरंभ करिछि सूर्य अभियान। सतीश धवन स्पेस सेंटर आदित्य-L1 को आज सफलतार सहित प्रेरण करा जाइछि। आदित्य-L1 को नहीं महाकाश को गला PSLV एक्सेल रॉकेट। अभियान उत्क्षेपणर 127 दिन यात्रा करिबा परे 15 लाख किलोमीटर लग्जरियन पॉइंट रे पहुंचिबो।
आदित्य-L1 महाकाश यान को इसरो पृथ्वी ठारू 1.5 न्यूत किलोमीटर उच्चरे हालो ऑर्बिट रे उपस्थापन करिबो जहाँ इसरो पई एक जटिल कार्य कारण हालो ऑर्बिट रे पृथ्वीर आकर्षण शक्ति शेष होउछि एवं सूर्यर आकर्षण शक्ति आरंभ होउछि एठारे कोनोसी छोट वस्तु को दीर्घ समय रखा जाई पारिबो तेबे सौर यानर गति को नियंत्रण करा न गले तार सीधा सूर्य अभिमुखे चली ताहा सीधा सूर्य अभिमुखे चली जिबार जहाँ आशंका करा जाउछि हेले ये सफलता नै कि अशोक रथ महाकाश विज्ञानी फोन लाइन अच्छी आलोचना करवा सर स्वागत करुच्ची ओडिशा रिपोर्टर को सर आज उत्क्षेपण सफल होइछि मिशन सफल पई आहुरी 4 मास अपेक्षा करने को पड़िबो ये जो आज आदित्य-L1 रो ये अभियान केउ केउ पर्यायक्रमे जीवो टिके विस्तृत भाव में सर आलोचना करिवे। नमस्कार नमस्कार सर जहाँ कहले आज गोटे बहुत बड़ा आज गोटे इसरो सूर्य नमस्कार करछि माने आदित्य मिशन लॉन्चिंग हला आ बहुत सक्सेसफुल हेछि से माने ताकू नै कि जे डिजायर्ड ऑर्बिट रे प्लेस करछथि और 215 बाय अबाउट 18000 किलोमीटर एलिप्टिकल ऑर्बिट तो ताकू से माने जेमति चंद्रयान 3 रे जेमति ऑर्बिट रेज करथिले जेमति फर्स्ट ऑर्बिट रेज करिवे तापर ताकू इंजेक्ट करिवे माने जतले एस्केप वेलोसिटी माने लिमिट पहुंचबो ताकू इंजेक्ट करिए सूर्य को L1 पॉइंट को तापर सेठी जाई कि L1 पॉइंट पहुंचवा आगरो से माने गोटे हेलो ऑर्बिट ताकू ऑर्बिट इंजेक्शन करिवे और सेटा सेटा प्राय लागिवो 100 एठू आज तारु लागिवो 127 दिन तो से 27 दिन जाई कि L1 ऑर्बिट रे एटा प्लेस हबो और पूरा एलिप्टिकल ऑर्बिट सेटा कंटिन्यूअसली सेठी अनऑब्स्ट्रक्टेड पूरा सूर्यंकर व्यू पाई करिवो तापर रिसर्च करिवो निश्चित भाव में सर ये जो 4 मास लागिबो समय 4 मास परे सूर्यंक जदि ये मिशन सफल हुए केउ केउ दिगरे कोन कोन तथ्य संग्रह पाई ये मिशन देखंतु हमें उडे हमरो चंद्र ऊपर बहुत डाटा अच्छी साइंटिफिक डाटा अच्छी हमरो चंद्रयान 3 बहुत डाटा पठेची तापरे चंद्रयान 1 रे भी हमें माने सेठी जळ थिला बोली हमें प्रे करछु किंतु हमर सूर्यंक ऊपर कोनोसी एबे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हेइनी जोटा कि माने साइंटिस्ट मानकर काम रे आसीबो तो सूर्य होचंदी गोटे माने आम सेंटर ऑफ ऑल माने लाइफ पृथ्वी पई सूर्य बिना आम किसी भाभी पारिबुनी सूर्य सब जते जो उत्ताप आसी केवल पृथ्वी सस्टेन कर लाइफ एटी रही पारि तार बहुत किसी मिस्ट्री अच्छी सूर्य विषय सूर्य केमती उत्ताप ये होती 4.5 बिलियन किलोमीटर माने इयर्स ओल्ड माने किंतु कंटिन्यूअसली से हाइड्रोजन सेटा को कन्वर्ट होची हीलियम को तापर हीलियम सेटा बर्न करिकरी से ये माने प्रत्येक सेकंड रे मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्ट होची हीलियम को तो सेही प्रोसेस ता माने कोन होची हमें बर्तन किछि जानिनु तार कौन रेडिएशन कौन होची सेठी फोटोस्फियर अच्छी क्रोमोस्फियर अच्छी आउटर लेयर कोरोना अच्छी से सब कोरोना गोटे बड़ मिस्ट्री तो से विषय रे साइंटिफिक डाटा किछि नाही हमर सर इसरो रे वैज्ञानिक माने गोटे बड़ चैलेंज हाथ को नै छंती एटा गोटे बड़ चैलेंज आ हमें पृथ्वी पृष्ठ जहाँ देखु हम गोटे सोलार ऑब्जर्वेटरी दरकार था एटा हबो गोटे स्पेस सोलार ऑब्जर्वेटरी जोटे कि हमें सूर्य विषय प्राय 7टा पेलोड रे तो तथ्य संग्रह करियो साइंटिफिक डाटा ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर समस्त सूचना आलोचना पाई अशोक रथ महाकाश विज्ञानी जी की अधिक तथ्य देथिले समय होछि बिग स्टोरी केट रखिबा नमस्कार।